related to structures engineers. Do you want to become a structure engineer? Yes, sir. Can you just tell us what is structure engineering? Structural engineering is basically it's a total of calculations and designing and analysis of the buildings structures. By this analyzing, we will do designing. After the designing, we will optimize how the what we say. We will optimize the seals, reinforcement bars, or if you will optimize it, we will give the what we say, or not to waste a more material. We will use as preferable and very consumable. Okay. What are the important IS code as an engineer for the structure engineers? Uh, Basically, it's IS 456 2000, IS 800 2016 steel, and wind IS 875 Part 1, Part 2, Part 3, and Part 4. Part 2, Part 3, Part 4, Part 5. Okay. What is honeycomb and what are the effects of honeycomb will can get on structures? Basically, honeycomb will occur on the structure due to not compacting or vibrating properly. By this, the what we say on a structure or a column, it forms like it. The honeycomb will appear. By that appearing, the steel will corrode with air, sir, so that it will collapse very fast or quick. Okay. What do I should like creep? Creep. Hmm. Creep is nothing but I have to look it once. Okay, no sure. Uh, what's the sales expression, Mr. Movesh? Basically, as I'm a fresher, whatever the company norms will follow, I will follow. Company norms or industry norms? Industry norms, sorry. Because my company can I can change the rule and I can offer you the Yeah. 5,000. Hmm? Okay. Yes, yes. What's your hobby? My hobby is playing volleyball, sir. Playing volleyball is your hobby. Last time when you played the volleyball? Uh, Yesterday itself. Okay, very nice. What is the standard height of that pole which we provide in the volleyball game? It's 6.2 for net, sir. 6.24 feet. Feet. That's nice. Very good. Thank you so much, Wes. This was nice talk with you. Good. Thank you, sir. Okay. Now next is Momin. After Momin, ready as per your comments. Anyone else after ready? Drop the message. Okay. Now, Mr. Momin, ready? Yes. Okay. Ji. Uh, Mr. Momin, tell me something about yourself which is not mentioned in your resume. But the thing that I have not mentioned in my resume is basically that there is a gap in my resume. So in that gap period, I have tried to do some activities which is basically beneficial for me in terms of learning software. So I have gone through with the various consultant. So there I have got opportunity to learn like basics of software like ETABS and how the structural drawings is being made and how the center line is to be taken, how the releases we should provide, and how to cope up with the bending moment, negative bending moment. So, in that is not being mentioned in my resume. So, in that time period, I have taken a break to join a structural firm for a time being so that I can learn new things. Very nice. What is the concept of, as you mentioned, a release? What is the concept of release? Release are basically we provide mainly in secondary beams, which are not being connected to column. So, Hmm. to resist, to overcome the negative bending moment, Hmm. so in that case, we'll provide releases. For reducing the negative bending moment. Difference between Yes. hogging and sagging. Hogging is basically when the load is applied to a beam and it gets deflected downward. So in that case, the behavior of that beam
is termed as hogging. And if there is a support at the ends, so in the end supports there is a upliftment in the beam, so that basically results in sagging. Okay. Uh, as an structure engineer, when we go for the design, what are the important factors we need to be considered at the time of designing the structures? Initially, we have to look for the plan as if the frames which will design as per plan. So, in it would be like essential for me if I'll get a drawing from an architect. So I'll just look for like how I can draw frame in that. So column placement is the first thing which I look for. Then secondly, I will look for the beams, like where I can avoid beams which will like diminish the aesthetic effect. Do you So have in that case, got it? Do you yeah, have any structural engineering structures experience? currently I don't have, but just for 2 months I've joined the firm, but I have not learned that much in that firm. So a basic experience I have. Okay. So how your old experience is useful for us for the structural engineering profiles? Sir, initially, um, as I've been through with the manual process a bit, so and apart from that, like basics of making of center line plan, column placement, and the positioning of the rooms in terms of drafting as well. So in that case, you don't have to rely on me, and you don't have to train me in that case in that particular field. So that will be beneficial for you. So I will be a like totally uh, a head start in terms of directly like going for designing an analysis process. Okay. Difference between analysis and design. Analysis is basically when we made up a frame and we'll try to analyze that like if we have any kind of disjointed disjointment in the structure. So if there is a disjointment or any kind of error, so the software will reflect. So that is the basically analysis part. And design is basically when I will go for concrete design, I will provide reinforcement and I'll get like how much reinforcement will be provided in particular section. So that is design. How long you will stay in your company, Mr. Hanvi? As far as concern, I'm looking for a company which is having a good growth opportunity in terms of different structural elements. So if I'll get a good growing opportunity and learn new things, so I will definitely stay for a long time. As in terms of my past experience, I've been in the organization for lately 3 years as well. Due to some unavoidable circumstances in COVID-19, in that case, I have to left the organization. So you can rely on me, sir, for like for a later on time, I can be a valuable employee to your organization. Great. Very good. Thank you so much, Mohammed. Keep continue. बहुत अच्छा आ रहा है. Okay. Now next is Mr. Reddy. Am I audible, sir? Yes, you are. Mr. Reddy, what is the use of StatPro and what is the full form of StatPro? The full form of StatPro is Structural Analysis and Design. StatPro is used for analysis and design of steel and concrete structures. Steel and concrete structures. Hello. Hello. Am I audible, sir? Yes, you are. Okay. And we will design foundation in the StatPro. Okay. Introduce yourself, Mr. Reddy. First of all, thank you for giving this opportunity to interview in this role today. My name is Venvardhan Reddy. I have completed my bachelor's in civil engineering from Vigyan Institute of Technology and Science, Hyderabad, and I have completed my diploma in civil engineering from Samskruti College of Polytechnic. Currently, I am working as a QA/QC GET in OMC Builders and Developers, and I am learning structure course from Unix Civil. My hobbies are playing volleyball and watching news. And once again, thank you for giving these opportunities. Your experience is in QA and QC. Yeah. Why want to left your QA and QC job and you want to make your career in structures?
Firstly, I want to have a site exposure and site knowledge, and then I want to shift towards a structural field, so I can get a better knowledge and a better scope in future. What type of site knowledge you're talking about? Basically, I will see the structural element in the site by seeing the drawings, and I will get the interest how we design the structures actually from basics. So I will get more interest in learning structures. Okay, that's why you want to make your career in structures. Yeah. Uh, how your old experience is useful for us for your current job as an structural engineer? So basically, I'm seeing all the structural elements like beams, columns, and how do we design to fit in a residential flat or commercial flat. So I will get a basic knowledge about that, and I will be having a basic to medium knowledge to design a structure. So basically, I'm having a site experience. Okay, what's your strength and what's your weakness? My strength is goal oriented. I'm a goal oriented person, and my weakness is I will be concentration on only one thing at a time. What was your last goal and you achieved that goal? My last goal is to get a job in construction firm, and I have successfully attained a job in the construction firm. When you get that job? I got in September 2023, Okay, 2024. September 2024 only, right? So if I'll hire you, this is just a few months only, right? 3 to 4 months, right? Yes. So you want to left your current job and you want to come with us as an structural engineer? Uh, yes, sir. Means in 4 months only you want to left your current job. Uh, I have done internship before that, sir. So currently, I should have a full time offer in my hand before switching my career. No, suppose today I'm just going to offer you. You want to accept that offer or not? I will accept the offer by giving a notice period to my previous companies. In my company, I need an urgent employee. 1 month will be negotiable, sir. I will I will join with 1 month. Can you join with us in 1 week only? No, sir. My company will not allow me. What's your salary right now? My salary is 18,000 take home, sir. I'm going to offer you 30,000 a day from this month. No, sir. My company will not allow. Hmm? Suppose I don't need any experience now. You can just come without any paperwork. Are you ready for that? No, sir. In future, I will be getting problem. Okay. So you just want with paper only, right? As per the Yes. paper you want to. Very good. Uh, in my company, there is a 2 year bonds. Are you compatible to work with us with 2 year bonds? Yes, sir. And if you break that, I'm not going to share you any experience letter or anything else. And you have a penalty of 1 lakh rupees. Are you okay with that? Yes. Yes, sir. Okay, you need to pay the check before your job. Ready with that, right? Yes, sir. Okay. Okay. What is the biggest difficulties you face in career till now? Uh, Finding a job after BTech was very difficult time for me, sir. I have attended placements in my company. So you got So the prompt placement from the company, no, college only? I got one job, sir, Hmm. but I didn't like that, so I left the job. What was the reason why you don't like that job? There was an accommodation issue, sir. So you want accommodation, right? Sir? You want accommodations also from our side? No, sir. My
From my side, accommodation was not good. Okay, that was your fault, not the company fault, right? Yes, sir. My fault. Okay, Mr. Okay. थैंक यू सो मच रेडी. इट्स नाइस टू टॉक विथ यू. कंपनी हमेशा से कॉम्प्लेक्स करती जाएगी, चेक करना चाहती है कि हाउ उस टाइप ऑफ एम्प्लॉय यू आर. ठीक है, स्पेशली जब आप 4 मंथ्स 3 मंथ्स में जॉब चेंज करने का कोशिश करते हैं रेडी, तो ये सिचुएशन ज़्यादा बनता है. वो चेक करना चाहते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न और व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ आई एम गोइंग टू ट्रेंड यू, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू लेफ्ट दैट तो ये मेरा लॉस हो जाएगा ना. ठीक है. ओके जी, वेरी गुड, अच्छा रिप्लाई दिया आपने. नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर रवि, एंड आफ्टर रवि राम प्रसाद. मिस्टर रवि, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके जी. मिस्टर रवि के बाद रवि जी, आपके यहाँ इंदौर में बड़ी ठंड पड़ रही होगी भाई, हैं? Yes, sir. So I, when you just came from your office right now, or like Yes, at sir. six? Yes, Oh, sir. okay. Is there any fixed schedule or you're flexible with that because you are at the PM level, right? No, sir, I'm flexible. Okay. So what time required means 9 hours required. Is there any No, sir. attendance purpose also? No, sir, not required. I have power to come anytime and go anytime. This type of super job you have. Why you want to left that? Yeah, yeah, sir. Why you want to left that? No, sir, I don't want to left because it's my friend's company. That's why I have that power. Okay. So this is your friend company, right? Yes, sir. Okay. So you don't want to left that. You don't need any job in a structure, right? Yes, sir. I want to job in structure. Then I can anytime to switch job. I have told already that him. No, no. You have a good job. You don't have any time foundations. Then why you want to left and why you want to make your career in structures? Sir, I'm interested for structure engineering. That's why. Due to interest, you want to left that, right? Yeah, yeah, sir. So you're going to break your faith of your friend with you. So he is ready for my decision. Okay, he's ready with your decision, right? Yes, sir. Okay, this is your partnership work or you are working as a salary No, no, person? sir. On salary base. Only salary basis. Okay. Yes. Is there any PF function also, or you don't have any PF right now in your company? PF. Sorry, sir. PF. No, no, sir, not PF. No any PF. Okay. Direct you getting the salary by check or by account, right? So by account. By account. So you have a salary slip also? Sir, I don't require until now. In future, if required, then he is ready for. You know. Okay. So that is in mutual understanding right now, right? Yes. Okay. What's your salary expectations, Mr. Ravi? So currently my salary is 40,000. If I get more than 40,000, it will be well for me. But not for me because you are just fresher for me as in structure engineering. So if I pay Sir, you 45,000, what are the services you can offer us in that 45,000 or 50,000? Suppose I'll have. Sir, I have many knowledge according to architecture structure because I am also freelancing work before that job. So I have knowledge about architecture also. And previous companies also was architecture firm. So I have many knowledge about architecture, planning, designing, elevation, section, working drawings. So, but our firm is a structures firm. So, in earlier you just done the freelancing work also, right? So before 1 year, Before I one year. was yes. With your current job or means any other job was there at that time? So there was other job. Other job. So Yes. your company allowed you for doing the freelancing works? Yes, sir. They know about me because I have already told them. After my working time, I can do freelance works. Okay. So if I'll hire you, if you will do it your free time, your freelancing also? Yes, sir. If I get any work, I will not affect any work in company if you hire me, and I will work after my working time.
How can we trust you're not going to affect our work? If So someone have, because yes, I'm also working in a past company same year, so I don't work in office time for my okay. personal work. So how you will manage that? Because you need time, na? Sir, late night. Late night you want to work with freelancing, right? Yes, sir. And suppose in morning if you're tired, you're not going to work properly or work, then it is a loss. So I'm not getting too much work in month 1 or 2 work, so it's not affect to my job role. But my I company is manage it. not allowed for the moon work. Moonlight work Uh, don't allowed. Sir, if I get more packages, then I can left to the freelancing work. Okay. So what package you want from us so that you Sir, 50. 50,000. Uh, yes. Sir. Okay. Then you're not going to do any moonlight work, right? No, no, sir, no, sir. ओके जी. देखो यहाँ पर अभी फंस गए हो तुम. ये वर्ड जब तुमने बोल दिया फ्रीलांसिंग, अब तुम रिजेक्ट हो चुके हो इंटरव्यू से. ठीक है. अब सिर्फ मैं तुमको घुमा रहा हूँ. ठीक है. इसको बताने के लिए कि बाकी लोग ध्यान रखें, ये गलती नहीं करनी है. हम प्रीवियस कंपनी में, करेंट कंपनी में कहीं पर भी फ्रीलांसिंग वर्ड को ऐड नहीं करेंगे. देखो स्वाभाविक सी बात है कि मैं आपको, मेरा एक टाइम है पढ़ाने का ना, अगर मैं दिन भर पढ़ाता रहूँगा तो मेरे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो प्रोडक्टिविटी में कमी होगी. ठीक है. जैसे मैं अभी तो फ्रेश होकर पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा एकदम फ्रेश है ना. अगर मैं Yes, sir. सुबह से पढ़ाता होता, ठीक है, और दिन भर पढ़ाता होता, मैं ऐसे थका हारा रहता है ना. तो इसका मतलब क्या है, काम पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है. इसलिए कोई भी कंपनी, मूल आप करो, कंपनी को मत बताओ. ठीक है. मून लाइट वर्क में कोई भी कंपनी पसंद नहीं करेगी कि कोई भी उसका एम्प्लॉय काम करे. आप खुद सोचो ना, कल को क्या होगा, आप मेरे ही क्लाइंट को क्या बोलते हैं बाहर बात करोगे, हम आपका काम करके दे देंगे. अब आप बोलोगे नहीं 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 सर, हम कैसे मान ले, कंपनी कैसे Yes, मान ले. ठीक है. तो यहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाते हो रवि. और उसका मेन रीज़न क्या है, ये फ्रीलांसिंग वर्क. आप ये जरूर बोल सकते हो इन लास्ट कंपनी. ठीक है. ये जो आपने दूसरा बोला फ्रेंड कंपनी ना, ये भी बहुत बड़ा गड़बड़ वर्ड है. ठीक है. कंपनी को नहीं पसंद है कि आप किसी फ्रेंड की कंपनी में काम करें. क्यों? क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. ठीक है. और कंपनी चाहती है कि कोई कंफर्ट जोन वाला इंसान मेरी कंपनी में ना आए. तो ये दूसरी मिस्टेक थी. इस इसको केवल आपको नहीं देखना है, सबको देखना है. फ्रेंड की कंपनी नहीं बतानी है. हाँ, एक XYZ पर्सन की कंपनी है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं जानता हूँ, कंपनी को क्यों बताऊँ. समझ रहे हैं ना. yes, sir. कोई भी आप सोचिए ना कि अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरे कंपनी में काम कर रहा होगा और ये बताए कि मैं कभी भी जाऊँ कभी भी आऊँ, तो ये दूसरे एम्प्लॉय के लिए गड़बड़ है ना. दूसरे Yes, एम्प्लॉय भी तो यही करेंगे ना कि क्या बोलते हैं यार, ये तो कभी भी आता कभी भी जाता, हम भी जाएंगे, है ना. तो रूल इज सेम फॉर एवरीवन, आप चाहे जिस टाइप के एम्प्लॉय हो. क्लियर. yes, sir. ओके. थैंक यू सो मच रवि. होप सो ये दोनों लर्निंग आप याद रखेंगे, एक फ्रीलांसिंग, Yes, दूसरा sir. फ्रेंड Sure, की sir. कंपनी. ठीक है. चलेगा. Yes, sir. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर राम प्रसाद. तो गैस ये दोनों गलती को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत लोग गलती करते हैं, ऐसा रवि केवल नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ये Yes, sir. मिस्टेक नहीं करना है. ओके. मिस्टर राम प्रसाद रेडी. Good evening, sir. Good evening. Ram Prasad, let me clear. You want to open your own something in future or you looking for the job? Let me clear first. अभी मॉक स्टार्ट नहीं किया, पहले बता दो. Own job, मतलब own future. Own you want, right? You don't have any plan to do the any because you are right now licensed engineer, right? Yes, sir. ओके. दैट्स वाई. तो गाइस जब ऐसा कोई बता देता है तो उसके क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, क्योंकि नाउ हिज टारगेट इज नॉट टू गेट द जॉब. तो इंट्रोडक्शन इज नॉट दैट मच प्रायोरिटी फॉर मिस्टर राम प्रसाद. सो मिस्टर राम Yes, प्रसाद, sir. यू वांट टू ओपन योर ओन कंसल्टेंसी, राइट? Yes, sir. व्हाट इज द रीजन? Uh, own consulting, own my own consultancy. Is I am interested own consultancy ओके. because I am uh,
not under anyone, You don't want to do the job in under any person, right? any person. Okay. So you like freedom. Freedom. Yes, So sir. Yes. so suppose any companies, any person offer you work कि I need in 5 days, but you are the freedom person. It is a loss for them, na? Because you're not going to work in Yes. 5 days. You will say कि I'll do Ah, from my own terms. I will do this in 10 days only. not. I am told. I am told him. So I work from home Okay. like a freelancer. Hmm. You want to do the freelancing. What is freelancer? What is freelancer? Sorry, Hmm? Right. sorry, sir. What are the important IS code as an structure engineer? I score IS 456/2000, IS 875 Part 1, Part 2, Part 3 wind load, IS 1893, 2005 and 2002 2005 seismic earthquake force, earthquake, or 800 steel accident to 2007. Okay. Mr. Ramprasad, which IS code we use for ductile detailings? Ductile detailings. So IS ductile. Difference So between steel yes, no, not still. A difference between long column and short column. less than Ly Ly by Lx greater than 12. Ly by effective length Hmm. effective length greater than 12 to long column, or L effective less than 12 to short column. ओके जी। रामप्रसाद, आप कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं कर रहे हो दोस्त, है ना? yes sir, yes sir, कम्युनिकेशन पे बहुत कॉम्बिनेशन में बहुत. हाँ, आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हो। जब मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन कर रहा हूँ तभी आप आंसर कर पा रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, ये थोड़ा सा एक बैड इम्पैक्ट के तौर पे आपको मिलेगा। बेटर है कि अगर आपको बड़े क्लाइंट्स देखने हैं तो आपको कम्युनिकेशन पर वर्क करना चाहिए। ठीक है, इससे आपको बड़े Yes. क्लाइंट मिलेंगे दोस्त, और पैसे भी ज़्यादा आपको मिलेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे सर, टाइम निकाल के मतलब प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग. करके। ठीक है, प्रैक्टिस करके। मॉर्निंग में एक मैडम प्रैक्टिस कराती हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, आप चाहे तो उनके थ्रू कर लीजिए। ठीक है, वो आपको 1 घंटा समय देती हैं, 1 घंटे आपको टॉपिक देती हैं। यू नीड टू बी एक्सप्लेन दैट टॉपिक, ये वर्क है। चाहे तो वहाँ पर 1 घंटे आप अपना समय दीजिए। अगर आपके पास वो समय नहीं है तो डेली दिनचर्या में आपके आसपास कोई ना कोई खास पर्सन रहता होगा, रहती होगी, उनको बोलिए कि आई नीड 30 मिनट, 1 आवर्स, आई जस्ट वॉन्ट। आपके लाइफ में अगर कोई भी खास पर्सन है, अगर वो आपका 15 मिनट आपकी बात नहीं सुन सकता तो खास नहीं, हटा दो उसको। ठीक है, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। उसको मुझे 15 मिनट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि व्हाट आर द थिंग्स आई डन टुडे। ठीक है, जस्ट उसको बताओ। ठीक है, और अगर थोड़ा और डेडिकेटेड हो तो लिख लो कि व्हाट वाज माय आप आपको डेली। सर जो मैडम जो सिखा था आपका इंस्टीट्यूट में, तो यस, मतलब कोर्स है. कोर्स है प्रॉपर, वो आपको एक्सप्लेन करेंगी। ऑलरेडी बैच चल रही है। ठीक है, बट देयर इज अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट फॉर दैट, 1000 फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, मीन्स 500 पर मंथ, दैट कोर्स फॉर द selection purpose. ठीक है, so that people can get the selections. ठीक है, but that is not compulsory for anyone from anywhere. Basically we want good communication skill होगी तो you can just speak your statements, at least what you want trying to say, you can explain that. That is the reason. So if you want, you can do that in early morning. I think 7:30 it is running right now. You can get that. Okay, you can just talk with Ankit sir. He will explain you about that. अदरवाइज कहीं आसपास में देख सकते हो, या फिर किसी से भी बोलो जो तुम्हारे आसपास में अच्छी इंग्लिश बोलता हो, तुम्हारा खास हो। ठीक है, उसको बोलो यार मुझे बताओ
मुझे एक्सप्लेन करना है, बस एक्सप्लेन करो। वो जैसे गलती बताए, वो भी गलती क्यों बताए बाद में, जब तुम पूरा बोल लो। ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगा दोस्त। ओके सर। और ओके एक जी। बात है सर, यस। मतलब कुछ पूछना है सर। तो आपका कोई सर दोस्त है जो सॉइल टेस्ट, सॉइल लैब वाला खुला ठीक है, है? बस एक मौका बचा, उसके बाद हाँ, अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके जी। सर। नाउ गीतांजलि, गीतांजलि रेडी? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। रवि वांट टू से समथिंग? रवि थोड़ा सा वेट कर लो। आफ्टर गीतांजलि मोक यू कैन डिस्कस। एक किसी ने बोला था ना स्क्रीन शेयर करने के लिए, रेडी रहेंगे लैपटॉप से। आफ्टर गीतांजलि मोक वी विल इंस्टॉल योर RCDC सॉफ्टवेयर ऑल्सो। ओके, नाउ गीतांजलि, how many lectures you was in Stat Pro? हेलो सर। 18 लेक्चर, 19 लेक्चर एक्चुअली मेरे से छूट गया है और मैं देखती हूँ आज, ओके, क्योंकि मैं आउट ऑफ पुणे थी 2 दिन, सैटरडे और संडे। आज ओके, मैं आई हूँ। ओके, so you go for the vacations, right? यस। Okay, that's nice. Okay, what's your hobby? माय हॉबीज आर पेंटिंग और ट्रैवलिंग और कम्युनिकेट विद फैमिली मेंबर्स। Your favorite vacations point means place. Actually, I'm from Ratnagiri, Ganpatipure. So I like to going for beach side. Beside you like because you're from Ratnagiri, right? Yes. Okay, ji. And which type of movies or your favorite movie name? Actually, I don't like watching movie, but actually, any full movie I want at home as not possible. In theater, I will watch full movie. Favorite movie is Ye Jawani Hai Diwani, Friends movie. Okay. And do you like to read the books also? Yes, I like to read, but through time issue. Okay. Suppose you get the opportunities to which type of books, fictional books, stories books, or any biography, which type of books you like to read? Uh, not particular. If anyone told it's good for the good for it is good book, then I will read it. Okay, not the particular zone, you don't have any zone for that, right? Yes. ओके जी। देखो ये सब क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, इसमें कोई सेंस नहीं बनता ना अगर देखा जाए तो इससे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, इससे पता चलता है कि विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर, गीतांजलि, हाँ। ठीक है। तो जैसे कि आपसे पूछा गया ना कि आपका फेवरेट वेकेशन, ठीक है, तो ये सबका अपना पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है, बट ये पर्सनल नहीं है कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि आप किस तरह के प्लेसेस पे जाना पसंद करते हो उससे डिसाइड होता है विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर। किस तरह की मूवीज़ देखते हो उस तरीके से किस टाइप के पर्सन आप हो। किसी को कॉमेडी अच्छी लग सकती है, किसी को लव स्टोरी, किसी को फाइट, किसी को कोई अलग अलग टाइप के भूत वाली बुक्स मीन्स किस टाइप के पर्सन यू आर। तो बुक्स में भी सबकी बुक्स की अपनी अलग अलग चॉइस है, कौन सी बुक्स, तो उस तरह का पर्सन होगा जिसको जिस तरीके की बुक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं इन HR राउंड्स टू नो विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। जैसे आपने एक वर्ड बोला कि नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द वॉच मूवीज इन द होम इन लाइक थिएटर ओनली यू वॉच, ठीक है। मे बी इसका Yes. रीज़न ये हो सकता है कि आप छोटे छोटे क्लिप्स देखना पसंद करते हो, राइट? ठीक है। अब इसे क्या पता चलता है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। Actually, I live in joint family. Then यस। full movie I can't watch ओके, ओके, गॉट इट, in गॉट same time. Yes, yes, because due to many responsibilities, it's not possible, right? So you can complete that. When you use that word, you can use complete. कि जैसे आपने joint family बोला ना, now I will हाँ. agree with that because I'm in the joint family. 10 काम आ जाएंगे, मैं 3 घंटे बैठ कर नहीं देख सकता हूँ easily, मैं possible है। Anybody want other Got it. You have a different responsibility for the different persons. So it's not possible to sit for the 3 hours and watch any particular movies only. And if they see and they will say ki, you don't have a time and you're watching the movies, it happens all the time, right? Okay. Now, what's your goal?
my short term goal is get a job in reputed company, and my long term goal is get achieve a good position where I can build my career and growth of organization Two. too. And what's your salary expectations? My current salary is 18,000 and my salary expectation is 25K to 13K as a fresher 25 to 30. What as per what month. per month? What do you know about CTC? Current salary 18, Or what CTC? 3K. What CTC you want? CTC means cost to Uh, company. ठीक है, तो कॉस्ट टू कंपनी ऑलवेज इन ईयर्स, ठीक है, 3 लाख 3 रुपीज, lakhs per ठीक है, पर एनम, year ठीक है. annual. दिस विल बी योर CTC, नॉट योर इन हैंड सैलरी, ठीक है. Okay. इन हैंड में बी 2.7 2.3. Why? Oh, yes. Because in your CTC we will deduct your PF, PF. we will deduct your insurance, okay, we will different deduct if I'll provide you any others activities like bus services, van services, we will deduct that also, okay. So इस तरीके से बहुत सी चीज़ें होती है जो कंपनी कट करने के बाद योर लास्ट अमाउंट ऑफर यू दैट, जो आपकी सीट ये है क्या बोलते हो आप ही का है जो PF है, बट नॉट यू विल गेट द इन मंथ, you will get after 6 months 7 months whenever you want, you can withdraw that, but for now you will get only 20,000. सपोज अगर तुमने एक अच्छी कंपनी में गेन किया 3 लाख पैकेज, अप्रॉक्स 20 or 21,000 only you will get the in hand, okay. So Okay, in sir. hand salary is different and CTC. CTC is different, clear? Okay. Yes, sir. Okay. And what is the biggest difficulties you face till now in your career? Actually, my confidence are little bit problem get a problem because I not told I want to told something Means you have, in front. okay, your confidence problem, right? Yes, sir. Okay, so you doing something for that? Uh, no, sir. ठीक है, करना चाहिए, ठीक है. देखो अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो उसे हमें करना हमारी समझदारी है ना, ठीक है. Yes. अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको फैट का प्रॉब्लम है तो चलना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, चलना पड़ेगा, फैट बर्न करना पड़ेगा, राइट, डू बी प्रैक्टिकल. Yes, sir. तो ऐसे अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है, आज आई जस्ट वांट टू से वन पर्सनल एक्सपीरियंस, वन ऑफ माय पर्सन्स, आई एम नॉट गोइंग टू से द नेम. तो उन्होंने बोला कि देखो इस तरीके के बच्चों को ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, मीन्स एट देयर एज, ठीक है, देयर इज अप्रॉक्स, इज वन ऑफ माय कजिन, तो अप्रॉक्स 20 year old, ठीक है. अभी 20 year old व्हेन आई वाज और माय अदर, तो 20 years मीन्स एक सिटी में जैसे जो बच्चे रहते हैं बहुत फ्रैंक होते हैं, राइट, और एक बच्चा होता है जो बहुत थोड़ा सा इंट्रोवर्ड होता है, डिफरेंट डिफरेंट. आप घर में, आपके भी घर में ऐसे हो सकते हैं, मे बी यू आर दैट पर्सन. तो इंट्रोवर्ट का क्या होता है कि थोड़ा सा वो शाई होते हैं, वो थोड़ा बात करने में क्या स्टेटमेंट दें और कैसे बोलें, इस चीज़ का रिएक्ट कैसे करें उनको नहीं पता होता है, ऐसा होता है ना. तो अब इसको रिलीज कैसे कर सकते हैं, उसमें देखा जाता है कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज की तरफ इंट्रोवर्ट होना बुरा बात नहीं है, ठीक है. इंट्रोवर्ट पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे मतलब कि एक होता है जो चुप रहता है बट जो बोलता है बहुत अच्छा बोलता है, दैट टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट इज गुड. बट बोलते समय घबराहट हो रही है, इंट्रोवर्ट गड़बड़ है, ये इंट्रोवर्ट एक्चुअली नहीं है. इससे बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस का लैक होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तो उसके लिए ना यू नीड टू बी टॉक विद द अदर पर्सन्स, ठीक है. कैसे कर सकते हो, व्हेन यू जस्ट टॉक विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करो, ठीक है, अपने भाषा में कम्युनिकेट करो. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद मराठी लैंग्वेज, नॉट एन प्रॉब्लम, बट इफेक्टिव, ठीक है. इफेक्टिव मतलब शुद्ध मराठी बोल सकते हो तो और अच्छी बात है. इफ़ यू आर यूजिंग द हिंदी यू कैन यूज इन हिंदी, बट कोशिश करो थोड़े थोड़े अननोन पर्सन से बात करोगे, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. और वही एक तरीका होता है कि यू कैन गेन गुड कॉन्फिडेंस, ठीक है. हम लोग भी बहुत दिन तक जब घरों के अंदर रह जाते हैं ना, कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि कोविड के बाद किसी से बात करने का ज़्यादा मन नहीं होता था,
ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, लगता है कैसे बात करें, बट अभी वो सिचुएशन नहीं है। तो ऐसा होता है, एक इंसान अगर कमरे में रहे या फिर लोगों से ज़्यादा बात ना करे तो हो जाता है। यू नीड टू टॉक विद द पर्सन्स, ठीक है। Yes, sir. ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच गीतांजलि। बस कोशिश करना कि जो एचआर की छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इनको अगर रिमूव करोगी ना तो ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, यू विल गेट द सक्सेस। Okay, sir. Thank ओके, you. ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज कोई स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था आरसीटीसी के Yes, इंस्ट्रक्शन sir. के लिए।